Students, a very good morning to all of you. Still, सारे बच्चों को पता है, दिख रहा होगा. I'm from school, taking the class from school. Today is chilled, okay. थोड़ी ठंड आज बढ़ी है. I would request everybody to take a proper care of themselves. अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, and listen to the parents. Take a proper care of yourself. Use mufflers and scarves so that this portion gets protected. आपके ear, nose ये सब protection होना बहुत जरूरी है. ठंड नहीं लगने देना है बेटा अपने आप को protect करके रखिए so that you're hale and hearty. Okay. Aman Kumar, I can still see you on my screen. Okay. So behave properly in the class. Boys, today is 17th. Half of the month has gone and we had started revision. 17 days हो चुका हम revision कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए that your annual examination will start on the day it is being scheduled, means first week of March. हमारे पास सिर्फ only 1.5 month है and we have to do the revision. Those who are still waiting कि अब क्या है, अभी भी 1 महीना समय है, बच्चे आपके पास समय नहीं है, आप घर पे हैं, so you are very much relaxed. Don't relax. आपके एग्जाम्स के लिए get yourself prepared. आपकी जो 40 minutes की क्लास में आपके revisions हो रही है, that is not very much enough. You have to do the revision at your home also. अपने घर में भी आपको revise करना है और जहां कोई डाउट हो you just ask the teacher. जरूर पूछिए कि मैम इसका क्या जवाब होगा. Okay. Question का pattern, you have got the syllabus, you know the blueprint. आपको blueprint का पता है, आपको blueprint का पता है कि कैसे classes exams आते हैं. You have got the fill in the blanks, you have got the true and false. तो सारी चीज आपके पास है. You have got everything in your syllabus. Syllabus में blueprint भी है. तो make आप एक चीज का ध्यान रखिए कि whenever you study, आप उतना equal importance दे हमारे objective questions को and the subjective way. Okay. तो अब मैंने सोचा है कि since we have started the revision हमारे कुछ ऐसे होंगे कि हम एक वीक में हम पूरा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट वीक सारे सब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे. ठीक है, सही है ना. हम लोग लेसन 10 तक रिवीजन कर चुके हैं. टुडे विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ लेसन 11. ठीक है, आज हम लेसन 11 का रिवीजन करेंगे. लेसन 11 इज अबाउट आवर सोलर सिस्टम. द एग्जाम विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन. ये हमें कोई आइडिया नहीं है. It all depends on corona, how it reacts. If it is low, the cases are lower, if the school reopens, you'll surely have the examinations offline. But if it doesn't, you'll have it online. So it is not very sure. The picture is still to get clear. ये अभी भी clear नहीं है कि हमारे online exam होंगे, offline होंगे. But exam तो आपको ही देने हैं. So preparation should be yours only. So leave it कि exam हमारे online है, offline है. हमें प्रिपरेशन रखना है. ठीक है. सो दिस लेसन वाज आवर सोलर सिस्टम. हमने सोलर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा है एक बार क्विक रिकैप करते हैं, फिर विल आस्क द क्वेश्चन. अमन कुमार, अपने को तुम तो सीधा बैठो बिकॉज यू आर ओनली अ पर्सन हु इज डेविएटिंग. कभी इधर कभी उधर कर रहे हो. हाँ जी, गुड. सो आवर सोलर सिस्टम, our solar system comprises of sun and its 8 planets which revolves around it. Earth की 8 planets जो Earth की चारों तरफ revolve करते हैं. Okay, it comprises of Earth, sun and all the 8 planets which revolves around it. अब in 8 planets में we had one more planet earlier till 2000. Ma'am, what is the syllabus? Don't ask me about the syllabus. मैं जो पढ़ा रही हूँ पहले वो देख लो. Syllabus you'll be getting. If there is reduced syllabus, you'll be getting that. If you have got some of the syllabus from other teachers, so don't ask for me from me because till date I don't have any syllabus like that. Okay, मेरे पास ऐसा कोई syllabus नहीं है. आपको जो 6 लेसन पढ़ने हैं हाफ ईयरली के बाद, we'll first revise that and then we'll shift to हाफ ईयरली के पहले वाले portion. Okay, so आज का लेसन हमारा सोलर सिस्टम है. अनुषा unmute yourself. Our solar system comprises of sun and its 8 planets. Earlier, till 2006, it was 9 planets. है ना, Anusha? Am I right? Yes, ma'am.
Okay. What was the 9th planet? Pluto. Pluto was the 9th planet, which in 2006, according to ICMR, उसको बताया गया कि it is not fulfilling some of the criteria of the planet. कुछ एक planets के criteria को वो fulfill नहीं कर रहा है, so it is no more a planet, no more regarded as a planet, rather एक celestial body की तरह उसको हम पढ़ते हैं, है ना? It is a heavenly body which revolves around the earth, the sun. It is not a planet anymore. उसके बाद इसी लेसन में हमें ये भी बताया है कि the planet has been categorized into 2 categories. 2 कैटेगरी में प्लैनेट को कैटेगराइज किया गया है. प्रियेश रंजन, what are those 2 categories? Ma'am, those 2 categories of planets are Jovian planet and terrestrial planet. Vanshika, do you agree with him? Yes, ma'am. Now, tell me, what is terrestrial planet? Vanshika. Ma'am, please repeat. Vanshika, what is terrestrial planet? What do you mean by terrestrial planet? The planets that are made up of metal rocks are called terrestrial planets. Okay. They are similar to the Earth. Okay. Now I'll request everybody, those who are giving the answer, are just after giving the answer, mute yourself so that there is no sound from your side. Okay. Utsav. Utsav. Yes, ma'am. Vanshika said that the planets which are like Earth, which are made up of rocks and metals, are called terrestrial planets. Can you name the 4 terrestrial planets you're having in your solar system? Mercury, Venus, Mars, and Earth. तो पहले आपने सीक्वेंस से बता रहे हैं, तो अर्थ को स्किप करके आप मार्स नहीं बोल सकते, है ना? You cannot skip Earth and then you said Mars. No, you have to say in the Mercury, Venus, Earth, and Mars. Yes, good. Now, आशुतोष, आज भी तुम्हारा वही प्रॉब्लम है, या तो तुम्हारा मोबाइल कहीं रखा हुआ है और तुम दौड़ रहे हो, या तो तुम मोबाइल को लेके दौड़ रहे हो. मतलब क्लास के दौरान ऐसा क्लास रूम में घूमने की क्या तुम्हारी आदत है? I just don't understand. Last class में also you can go through the recording. मैंने आपको टोका था, and today also I'm doing the same thing. मैं भी अगर ऐसे लैपटॉप या मोबाइल लेके दौड़ दौड़ के पढ़ाऊं आपको, it will look good ना? ये तो अच्छा दिखेगा. Then why don't you make your mobile stand at ease at one place? भाई अब तो ऑनलाइन क्लासेस करते करते आपके 1.5 साल हो गए, more than 1.5 years. अभी ये बताना पड़ेगा वो how to keep your mobiles properly. Okay, good. Aman Kumar 45B, unmute yourself. Name the Jovian planets and what is the special character for Jovian planets? Ashwani Sharma, but don't give the answer. Chalo. Ma'am, can you repeat the question? Yes. What are Jovian planets and some special characters of Jovian planets? Ma'am, Jovian planets are those planets in which they are mainly made up of gases and ice. It means they're very far from the Earth, from the sun. The planets which are very far from the sun, made up of gases and ice, are called Jovian planets. Examples of it? Which example? Yes. Ma'am, Uranus, Neptune, Saturn, and ma'am, Jupiter. देखो फिर तुमने decreasing order में शुरू किया. You should have said in increasing order. Just Mars के बाद कौन सा planet आता है? Ma'am, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Good, very good. Okay, so this was all about the what Jovian planets. इसके बाद इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि the planets revolve around the sun, and which makes one revolution of the planets around the sun is said to be 1 year. Agreed? Say है ना? One revolution around the earth, around the sun, is said to be 1 year. तो क्या हर एक planet का 365 days and 4 hours fixed year है? नियति मोहनी? No, ma'am. Who gave this answer? Utsav, मैं mute कर दूं तुम्हें?
No, ma'am. अच्छा, सबको पार्टिसिपेट करने दो. दिस इज नॉट डन ना. हर एक बच्चा सारे जवाब दे देगा, फिर बाकी बच्चे क्या देंगे, है ना. तो सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए. नियति, यू आर अनम्यूटेड. व्हाट इज रेवोल्यूशन? Ma'am, can you repeat the question? Yes, I can repeat the question, but tell me, am I not audible to you? Prateek Kumar, am I not audible? Yes, Then why there is a need yes, of ma'am. asking Now the you question? are. Okay. Now I'm audible. It means I was not audible earlier. Good, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, Yes, ma'am. सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखिए. एक क्वेश्चन को मैं, आप कहेंगे मैं उसको 10 बार रिपीट करूंगी, बट गलती अगर मेरी तरफ से होगी तो, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, then I'm not going to repeat the question again and again. You're there in the class, so it is आपको ध्यान देना चाहिए मैम ने क्या क्वेश्चन पूछा. मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं पूछ रही हूँ, मैंने क्लास को इसको ओपन फोरम में दिया है. Everybody should participate in it. नियति, बोलो. What do you mean by revolution? What do you mean by Earth revolution? also moves around the Earth also moves around the sun on its own axis called the orbit. It takes 365 days to complete one revolution. It causes changes in seasons. Season. Okay, Niyati, when you're talking about revolution, what is the need of talking about the axis? Earth rotate on its own axis is called rotation. And movement of Earth around the sun, sun का चक्कर काटना revolution कहलाता है ना. सन का चक्कर काटना रेवोल्यूशन. तो क्या सिर्फ अर्थ करते हैं? नो, मैंने सिर्फ सिंपली कहा था व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेवोल्यूशन. सो रेवोल्यूशन, इट इज द क्या, movement of planets around the sun is called revolution, and each and every planet revolves around the sun on its own path. उस path को हम क्या कहते हैं? What do we call that path? नियति, आप ही ओपन है अभी, बताइए. Orbit. What is the shape of the orbit? Orbit. सही है, right? Then what is the shape of it? Ma'am, sometimes circular and ellipses. Sorry, your word is not clear. Your word is not clear. हाँ उत्सव, बोलो. Ma'am, in circular shape. No, it is not circular. We don't call it circular. We have got a special name for it. We have got a specific word for it. What is that word? Akarshan, bolo. Akarshan. What is a special word for it? Ma'am, flat. I'm getting so many answers in my chat box. But till now, I have got 12 chats. अभी सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, आशुतोष. Only one. And Ridhima also. Yes, Ridhima also. Ma'am. Bolo, you're there. Ma'am, ellipse. Ma'am, in the shape of flattened egg. मतलब you cannot spell out that word. उसको नहीं spell कर पा रहे, तो flattened egg बोल दिया है ना. उत्सव बहुत clever हो गया है ना उत्सव? Very clever. What is the specific word for it? Flattened egg is right, but will you say it is flattened egg? The shape of the orbit is elliptical. No, elliptical. Or we can say it's oval in shape. इसका shape कैसा है? Elliptical या oval? Oval. ठीक है? We call it elliptical. Okay, next. What are the 3 specific criteria a planet has to fulfill so that it can be called planet? एक planet को planet बोलने के लिए क्या 3 चीजें चाहिए? 3 specific reasons, 3 specific characteristics. पहले सारे बच्चे put your hands down so that I can ask. भूमि सिंह, शैन अब्दुल्ला, अमर दुबे ने हाथ नीचे कर लिया. ओके. प्रियेश और अनुषा,
चलो, शानवी एंड वंशिका. भूमि, characteristics that makes a planet. बोल. भूमि अनम्यूट करो. You are there. हाँ बोलो. Ma'am, atmosphere. Okay, it must have Ma'am, presence of. atmosphere. Okay, it must have presence of atmosphere. Next. Ma'am, water. Okay, it must have the planet must have water. And ma'am, sunlight. See, sunlight आप कह तो रही है, but sunlight we don't say it like this. The essential thing or the essential conditions that need a planet to be called planet is first presence of atmosphere. Secondly, it must have liquid water. हमारे मार्स में यही तो नहीं है कि नहीं उत्सव? हमारे मार्स में मंगलयान गया ढूंढने के लिए कि भाई वहां सब कुछ है. It has got atmosphere also, but does it contain water? तो इसी के लिए तो you must have the planets के 3 कंडीशन चाहिए. No water. So 3 कंडीशन चाहिए. पहला है it must have atmosphere चाहिए. You must have oxygen, nitrogen, carbon dioxide, so that you can respire, you can breathe out and all. Secondly, that planet must have liquid water. अब आप कहेंगे जोवियन planets की बात, तो वहां पे तो planets में water है ही. That too in which form? Solidified form, ice form. Jovian planets क्या है? It contains gases and ice. तो वहां गैस भी है, मतलब एटमॉस्फेयर भी होगा ही, और आइस है. we don't need ice. आपको आइस दे देंगे, क्या काम करेंगे आप उससे? No. So planet must have atmosphere. हवा चाहिए, liquid water चाहिए, and that planet should be right distance from the sun. अब जैसे मार्स की बात करते हैं हम, मर्करी की बात करते हैं, या फिर वीनस की बात करें हम. वीनस में क्या है? इट हैज गॉट एटमॉस्फेयर. कैसा एटमॉस्फेयर है कृतिका? वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा है? वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा है? अनम्यूटेड है बेटा, बोलो. अच्छा, एक बात का ध्यान रखो. If you don't know the answer, kindly say कि मैम I don't know the answer, so that I don't do it. Wait for you. हमारे 40 मिनट की क्लास में अगर हम ऐसे वेट करते रह जाएंगे, फिर एक चैप्टर से खत्म नहीं होगी रिवीजन की. अक्षय, what about the atmosphere of Venus? कैसा एटमॉस्फेयर है वहां का? Venus has thick and Venus has got thick atmosphere. वहां का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, बहुत घना है, and this is the reason कि वो दूसरा प्लैनेट होने के बावजूद सबसे ज्यादा हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट है. Isn't it? वो क्या करता है? वो सनरेज को अब्सॉर्ब कर लेता है. इतना थिक है कि सनरेज को अब्सॉर्ब करके रख देता है, जिसके कारण क्या होता है? पूरा हीट को अब्सॉर्ब करके रख सकता है. तो भाई इतनी हीट रहेगी तो क्या वहां पे लाइफ रहेगा? Will there be any life? No, ma'am. सूरज की रोशनी थोड़ी तेज हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, है नहीं है? गर्मी के दिनों में सूरज की रोशनी थोड़ी तेज हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं. आप वीनस का सोचो, जो कि सन के सेकंड प्लैनेट माना जाता है, उसके बाद उसमें इतनी ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर है कि इट डज नॉट क्या कहे वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता एटमॉस्फेयर ये को, हीट को. रादर इट एब्जॉर्ब्स, ये पूरे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. जिसके कारण क्या होता है? वी कॉल दिस एतियाक इकबाल, वी कॉल बीइंग द सेकंड प्लैनेट. अर्थ से सन से दूसरा प्लैनेट है. पहला है मर्करी, लेकिन ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है. सन के नजदीक होते हुए भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है. वो जो पार्ट सन के सामने होता है वो हॉटेस्ट होता है, सन के पीछे वाला पार्ट कोल्डेस्ट हो जाता है. लेकिन वीनस का हैज गॉट एटमॉस्फेयर, थिक एटमॉस्फेयर. यहाँ पे लाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या करना है? इसने लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना होता है, लेकिन इसने अपने उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेना है. तो
वीनस क्या करता है, ये हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई लाइफ फॉर्म होगा कहाँ से? लाइफ फॉर्म के लिए हमें एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए, 25 to 27, 40 इतने डिग्री टेम्परेचर तक हम रह सकते हैं। अगर वहां पे 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो कैन यू इमेजिन, 60 तो बहुत कम ही बोल रहे, वीनस में तो मोर देन 100 डिग्री का टेम्परेचर हो सकता है। तो क्या वहां पे हम रह पाएंगे? तो यही 3 कंडीशन है फॉर अ प्लैनेट, फॉर अ सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट। सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट, प्लैनेट की लाइफ वहां हो, इसके लिए क्या 3 कंडीशंस है? वो है पहला एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस, दूसरा प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर, और तीसरा राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से राइट डिस्टेंस। सही है ना? कब लाइफ फॉर्म हो सकता है किसी प्लैनेट में? कब लाइफ फॉर्म हो सकता है? लाइफ फॉर्म तभी हो सकता है किसी भी प्लैनेट में when it accomplishes 3 conditions. What are the 3 conditions? The planet must have liquid water, the planet must have atmosphere, and a planet must have right distance from the sun, so that neither it's very hot nor it's very cool. That next. Tell me something about the satellite. What do you mean by the term called satellite? What do you mean by the term called satellite? Shweta, बोलो क्या है सैटेलाइट बच्चे? किसको सैटेलाइट कहते हैं? आपकी तो एक बार हाँ बोलो आते, बोलो। Yes, ma'am. Satellite is an object that revolve around a much large object. अच्छा ये अगर कहते हैं ना तो ये फिर थोड़ा गलत हो जाता है। Planet is an object which revolves around a much around object. No, satellites are the heavenly bodies. Satellites are those celestial heavenly bodies which revolve around the planet. Am I right? The satellites are those heavenly bodies which revolve around the planet. आप ये जान के रखिए, सन का चक्कर काटने वाला planet और planet का चक्कर काटने वाला satellite. These are some natural satellites also. There are some natural satellites also and some artificial satellites. Artificial satellite, what are these? Who will tell me what do you mean by artificial satellite? उत्सव का हाथ सब में आता, बहुत अच्छा लगता है बच्चा, लेकिन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पूछ सकते ना। मुझे पता है कि यू आर वेरी सिंसियर, लेकिन सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना बेटा, है ना? चलो, बहुत बच्चों ने अभी भी वीडियो अपना ऑफ कर लिया है, तो ऐसे बच्चों को मैं क्लास से वेटिंग एरिया में डाल दूंगी। अगर किसी का वीडियो मैंने ऑफ देखा है तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस व्हिच यू आर डूइंग। मैं भी आपको वीडियो ऑफ करके पढ़ाऊं, आपको पढ़ने का मन करेगा क्या? कहाँ से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? विल यू लाइक टू लिसन टू मी? नो। तो मैं कैसे मान लूं आपकी बातें? चलिए वीडियो ऑन कीजिए सारे बच्चे। शानवी राज, अनम्यूट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम किसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं? और इसका कोई यूज भी है या ऐसे डाल दिया जाता है? बताओ शानवी। शानवी, you got stuck. आप एकदम स्टिल हो गए। शान अब्दुल्ला, unmute yourself. शान अब्दुल्ला, unmute yourself. Shan, can you hear me? Yes, ma'am. Cool. What do you mean by artificial satellite? Artificial satellites are the man-made objects which revolves around the planet, and it is launched in the space through rockets and helps us to check many things like weather report, TV signals, etc. अच्छा, जैसे कि अभी आज का न्यूज में आ रहा है ना, 17 से 20, 17 to 20, there will be chilling effect. अभी की तरह ही होगा, बहुत ठंडी पड़ेगी। कैसे पता चला? कोई भविष्यवाणी तो नहीं? पहले के जमाने में दिखता था ना, भविष्यवाणी होती थी, उठ जावत, तेरा वध होने वाला है, ऐसा कुछ सुनने को पता था। अभी कोई भविष्यवाणी तो नहीं हुई होगी? हुई होगी क्या? No, कैसे ma'am. पता चला? No, ma'am. No, ma'am. हम लोग महाभारत या रामायण देखते थे ना, तो पीछे से आवाज आती थी, भविष्यवाणी होती थी, आकाशवाणी, उठ जा, तेरा क्या काल निकट है, लाइक दैट।
लेकिन अभी जो 2 दिन बहुत तेज बहुत ठंड पड़ेगी, ये कौन बताया हमें? न्यूज में आया है कि 17 से 30 इट विल बी वेरी कोल्ड. तो who said that it will be very cold? How did we get this information? हमें ये information कहाँ से मिला? भूमि. Ma'am, through satellites. Okay, through satellite. Through satellites. Yes, through satellite, the meteorological department got this information कि भाई आने वाले और 72 घंटे हमारे ऐसे ही क्लाउडी रहेंगे. ये क्लाउड छटने वाला नहीं है, ये ठंड कमने वाला नहीं है. There will be cold wave. तो ये हमारा सैटेलाइट बताया, हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको हमने स्पेस में भेजा है. तो जस्ट टू चेक द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वहां से इंफॉर्मेशन आया कि भाई हमारे वेदर जो है वो खराब रहेंगे आने वाले 3 दिन. हमारे फोन का सिग्नल, जैसे अभी इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? Who is, how, from where you are getting me? आप कैसे मुझसे बात कर रहे हैं अपने घर से? सत्यम, हमने कोई सर्वर को यूज किया है, हमने अपने सर्वर से आपके सर्वर को कनेक्ट किया है, and it is all being done by, Yes, ma'am. it's all being done by those Artificial. waves which is be there in the, which is getting through the artificial satellite. Okay, Artificial satellite. yes, so artificial satellites are the man-made satellites which are being there in the which are there in the space, जो हमारे wavelength को, जो हमें help करते हैं for getting the information about the weather, for getting the information about the nets. हम जो बात टेलीफोन के बारे में, न्यूज, दुनिया के किसी कोने में कुछ भी घटना घटती है, we get the news within seconds. अभी अर्ली मॉर्निंग में बिरजू महाराज की डेथ हुई, कथक डांसर, और अभी सुबह न्यूज खोलते हमारे पास ये न्यूज आ गया. हाउ कम? हमारे टेलीफोनिक मैसेजेस से या फिर सैटेलाइट से we can see through it. So it is all through the artificial satellite. Okay. Artificial satellite. Satellite. Who said satellite? Now next question. Why do we observe phases of moon? And पहले तो अपना hand lower करो so that I can ask the question. Lower your hands, please. Lower your hands. Why do we observe phase of moon? हमें phase of moon क्यों दिखता है? पतरिक, प्रतीक का नाम लिखा है, प्रतीक ने पतरिक. प्रतीक कुमार, अनम्यूट करो. प्रतीक कुमार, हाँ Yes, बोलो. ma'am. बोलो. Why do we observe phase of moon? Ma'am, the different appearances of moon on different days are now has phase of moon. Why do we observe? Ashutosh Kumar, 5C, बोलो. Why do we observe phase of moon? Unmute and say. Ashutosh, unmute and say. बोलो, बोलो. दोबारा आपने म्यूट कर लिया अपने आप को. Arnav Kashyap, give this answer. Why do we observe phase of moon? बोलो, you're unmuted. बहुत अच्छे दिख रहे हो, चलो अब दिखाने की जरूरत नहीं है. वंशिका बोलो. मुझे ये बहुत गुस्सा लगता है when the students are not unmuted and giving the answer. बोलो. Yes, ma'am. We observe the phases of moon due to the change in the relative position of moon and earth in respect to the sun. Okay, आपको बताया गया है sun, earth and moon. जब इनके position में changes आता है, we see the phase of moon. Can you tell me the two important phase of moon? बताओ. Ma'am, full moon and no moon. Full moon and no moon. New How moon. many? New moon. Now tell me, how many days does it take from a full moon to a new moon? Aniket Raj, bolo.
Ashwini Sharma is continuously giving the answer. Very good. Very good. Not a single answer question he has missed till now. एक भी क्वेश्चन उसने मिस नहीं किया है, and this is a very good one. बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, मैं यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, but nobody is unmuting. ऐसा क्यों? Ashwini, give this answer. Yes, ma'am. Ma'am, 15 days. Now tell me, how much time does the Earth take to revolve around the sun? Ma'am, 365 days and 6 hours. And how much, Kshitij Raj, how much time does the Earth takes to revolve on its rotate on its own axis? क्या हो गया? बोलो. Utkarsh Raj, give this Ma'am, answer. 24 hours. No, beta, don't give the answer like this. देखो भूमि भी unmuted है, but वो जवाब नहीं दे रही जब तक उससे पूछा नहीं जा रहा है. Try to be like them, क्योंकि सभी को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए ना. आप ऐसे बीच में जवाब दे देंगे. अमर दुबे. Okay. I know that you know the answer, but सबको मिलना चाहिए मौका. अमर, state the nature. Amar Yes, Dubey, can you hear me? हाँ. Can you say the nature of the shape of orbits? अभी तो बताया है मैंने. फिर से बताएं. State the nature of orbit of planet. Yes, ma'am. बोलो. What is the nature of orbit? What is the nature of orbit? Orbit का nature कैसा है? Shape. Ma'am, oval. We call it oval or we call it elliptical. मैंने शुरुआत इसी से की थी. Pradima Singh, unmute yourself. Yes, Pradima, unmute करो. Pradima, unmute करो. Name the first Indian satellite. Yes, ma'am. Name the first Indian satellite. Aryabhatta. It is Aryabhat, right? Aryabhatta. Yeah, it is Aryabhat. Next, Aryabhatta. name the planet which is known as red planet. Utsav. Ma'am, Mercury. No, ma'am. I know that. Is it Mercury? Ma'am, No, ma'am. No, ma'am. It is. Ma'am, Venus. No. Mars. Satyam Singh, it is Mars. Ma'am, Mars. अरे Yes, 8 Mars. planet है. 8 planet है. अगर आप लाइन से बोलते जाएंगे तो सब प्लैनेट का नाम तो आ ही जाएगा. नहीं सही है ना? बहुत इजी है. ओके, चलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेसन कल का रिवीजन यही लेसन होगा फिर से. ठीक है. और आपका आज का काम है, योर वर्क इज ड्रॉ, मेक अ मॉडल. मैंने आपको मॉडल बनाने के लिए दिया था. मेक अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम. आप सोलर सिस्टम का मॉडल बनाए. 5C 5B ने बनाया कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आप कोशिश करेंगे मॉडल बनाने का. एंड आप इसको बना के रखें एंड शो इट टू मी इन द नेक्स्ट क्लास. आज कल तो नहीं हो पाएगा, फ्राइडे तक हम ये मॉडल देखेंगे. ठीक है, बिकॉज मार्किंग भी है. और अगर हमारा स्कूल खुलता है हम इसको आपके ले भी लेंगे आपको क्लास. ठीक है, ओके. एंड आपका आज का होमवर्क है, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 11. राइट इन योर डायरी, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 11. कल हम लोग ABCDE सब करेंगे लाइन से, लेसन 11 का. तो सारे बच्चे वेरी गुड. उत्सव, आई कैन सी दिस चैप्टर इज अ वेरी गुड चैप्टर. बहुत अच्छा बच्चा है. ऐसे हमारे 5C 5D के सारे बच्चे अच्छे हैं, बट 5B और 5C के, बट कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे हैं. देखो कुछ बच्चे रेगुलर डायरी लेके बैठे हैं, दे राइट द होमवर्क कि मुझे क्या करना है. दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. बहुत अच्छा. राइट इन योर डायरी, डू लर्न लेसन 11, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 11. A से E तक पूरा याद करेंगे आज बैठ के. कल हम लोग A से E रैंडमली पूछेंगे. ठीक है,
क्योंकि हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, हम फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं छोड़ सकते और हम मैथ्स फॉलोइंग भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हो जाएगा, एकदम लास्ट मिनट चल सकता है, चल रहा है, कभी बंद हो सकता है क्लास, ठीक है ना? ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें आप लोग।